Good evening, guys. What's up? This is Shivadeep, and you're watching the cruise live. So it's basically 10:58 to be exact in the night, and like 2 hours before I received this package. As you can see, this is my new LG 24-inch bezel-less monitor, and I bought it specifically for editing my videos क्योंकि ये जो मेरा पहला वाला मॉनिटर है ये बहुत ही पुराना हो चुका है एंड इट इज़ गिविंग सम प्रॉब्लम्स एंड देयर आर डिफरेंट स्पॉट्स एंड डिस्प्ले प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग टाइम टू टाइम सो इट वाज टाइम टू चेंज माय मॉनिटर एंड बेसिकली आई ब्रॉट इट एंड ये कितने में ख़रीदा कितना में नहीं ख़रीदा ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ राइट नाउ एवरीथिंग इज़ मेसी अप हियर एज यू कैन सी ये रहा मेरा गोप्रो का स्कल केस माई गोप्रो खुला हुआ है ऐसे ही हेलमेट वेलमेट ये मेरा राइनॉक्स के गार्ड्स हेडफोन्स सब माइक वाइक सब ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं एक्चुअली कल एक राइड पे जाने वाला हूँ ऐसा कुछ बड़ा वाला राइड नहीं है छोटा राइड है 170-80 किलोमीटर्स का ही है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा उसके लिए आप देखते रहिए मेरा व्लॉग्स वन मोर थिंग इज दैट माई गोप्रो देयर इज सम प्रॉब्लम विद माई गोप्रो माइक का थोड़ा इश्यू हो रहा है इसीलिए मैं ये आपका नॉइस प्ले का जो व्लॉग एडिशन है ये मैं एक दोस्त से बोरो करके लाया हूँ क्योंकि अगर प्रॉब्लम आया तो इससे काम चलाना पड़ेगा सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स अनबॉक्स द मॉनिटर टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड 24MP88, that's the model out here, 60 centimeter, that is 24 inches. IPS display, I don't know what's that, sRGB over 99%, and inbuilt speaker in there. So let me unbox this package. I guess this is the stand. This is the stand made of aluminium, quite sturdy out here, and this is the base plate, quite a nice design, a curve LG written up here, quality assurance report which shows this is original one, and yeah, that's it. So first of all, the HDMI cable, a standard HDMI cable, standard plug, stand cover. This is the cable organizer actually, 2 screws, I don't know for what. This is the warranty card, user manual, and a CD. So basically that's it. These are the things in the box. So the back panel is total white in color. This is the power port. This is the headphone jack. This is the audio in that I guess for microphone and all. This is the VGA port, and you got 2 HDMI in there. One more thing about this monitor is that you can also wall mount this monitor, which is quite a good thing done by LG. So that's the front part, total bezel-less, only a little bezel which I'll show you when I'll turn on the display once. And this is the switch. These are the speaker grills. Brother is helping me out to fix this thing up. Say hi to the camera. Hi. Okay, so that's the monitor. You can see in my front सब कुछ मेसी है, मेरे को मतलब ठीक करना है सब कुछ. अभी के लिए ऐसे रखना है क्योंकि कल सुबह मैं निकल रहा हूँ. And I'm also planning to buy another table within a few days. Yeah. So you can see thin bezel up here. So पूरा monitor में ऐसे ही है. This is the stand. This looks quite beautiful, right? So this is the switch up here, and it acts as a remote, and like इसको right left करने से सब कुछ adjust होता है. Let me show you the settings up here. This is the picture mode, custom, reader, photo, cinema, color, weakness, game, and next is the menu.
So these are the basic things like brightness, picture mode, color adjust, sound output, sound qualities, and all general. As you can see, this is one LED out here. So ये रात में अगर रूम में अंधेरा रहेगा तो कीबोर्ड टाइप करने में थोड़ा इजी हो जाएगा. So basically these are the things and काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी है इसका. Thin bezels, quite sleek and stylish LG monitor. So big thumbs up for LG for making this kind of products. And yeah, I got this thing for 13,500. Actually Amazon का वो रिपब्लिक डे सेल चल रहा था तो तभी खरीदा, वरना इसका प्राइस लगभग है 18,800 एंड अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन सेल के लिए मेरे को मिल गया. अच्छा लक है. लेट मी शो यू सम मोर वीडियो शॉट्स एंड या दैट्स इट. Alright guys, so this is the monitor you have seen as of now and अभी कुछ ऐसा ही रहेगा कंडीशन, क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग को जाना है. Quite a nice monitor, quite worth the value and ये फोकस मेरे मुंह पे डिफोकस हो रहा है फिर भी. It's a 1080p display monitor with a 60 Hz refresh rate. So these are the few things that I told you about this monitor and so देखते हैं इसमें काम करके कैसा लगता है. And also I'm planning for my new desktop setup. This is बस चल रहा है, चलने दो. I'll show you once I make it. I'll give a whole tour what I did, what I did not. So with that said, this is Shivadeep signing off on the Cruise Life. Stay tuned, ride hard, ride safe. बर्फ से भरा हुआ है ये सुना सुना रास्ता और कोई रास्ता ही नहीं है और गाड़ी स्लिप करने वाले हैं कब. ओह माय गॉड.